हाय एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेसिकली फ्रॉम द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेगा और आपको करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं फ्रॉम मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस, या फिर आपको कभी सिलेक्ट ऑल दैट में अप्लाई भी कहा जा सकता है। मतलब जो भी ऑप्शंस आपको लगेगा कि सही है वो आप एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं एज करेक्ट आंसर, चूज कर सकते हैं एज करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आस्क हाउ दे विल नो their child is improving after they go home. Which are the nurse's best responses? Select all that may apply. जैसे कि मैंने कहा है यहाँ पे ऑब्वियसली एक से ज़्यादा आंसर आपको मिलेगा ऑप्शंस में। आपके पास पांचों ऑप्शंस हैं और पांचों ऑप्शंस में से आपको एक से ज़्यादा ही चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि सिलेक्ट ऑल दैट में अप्लाई। ठीक है। Your child's urine output will increase and urine will become less tea-colored. तो यहाँ पे when glomerulonephritis is improving, urine output increases and the urine becomes less tea-colored. So these are some signs that can be monitored at home by the child's parents. तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है योर चाइल्ड विल हैव मोर एनर्जी एज लैब टेस्ट्स बिकम मोर नॉर्मल। तो as glomerulonephritis improves, the child should have more energy and require less rest. But lab test values are not something that will be readily apparent to the family at home. तो इसलिए इसको आप select नहीं कर सकते हैं। Third, your child's appetite will decrease as the urine output increases. Now, the child's appetite should increase as the condition improves. तो ये भी नहीं जा रहा है। Next, your child's laboratory values will become more normal. Now, although the laboratory test values will normalize, now this is not something that will be readily apparent to the family at home. तो ये भी हम choose नहीं कर सकते हैं. Next, your child's weight will increase as the urine becomes less tea-colored. Now, ये जो बच्चे का जो weight है that will increase as the urine resumes a more normal color, indicating the lab values are returning to normal and the child is better. तो इसको आप चूज कर सकते हैं। Okay, moving over to the next question. Which statement by a parent is more consistent with minimal change nephrotic syndrome, that is MCN's, minimal change nephrotic syndrome? My child missed 2 days of school last week because of a really bad cold. अच्छा, तो an upper respiratory infection over here often precedes the MCNS by a few days. तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मोस्ट कंसिस्टेंट हो सकता है विथ मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट है आफ्टर कैंपिंग लास्ट वीक माई चाइल्ड्स लेग्स वे कवर्ड इन bug bites. नाउ bug bites आर नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विथ MCNS, तो ये नहीं होगा। Third, my child came home from school a week ago because of vomiting and stomach cramps. Now, vomiting and abdominal crampings are not typically associated with MCNS. तो ये भी आप select नहीं कर सकते हैं. Next, we have a pet turtle, but no one washes their hands after playing with the turtle. Now, pet turtles often carry salmonella, which can cause vomiting and diarrhea, but not MCNS. तो ये भी सही नहीं है। हमारा जो सही आंसर था वो था नंबर 1. Okay, next. The clinical manifestations of minimal change nephrotic syndrome was due to which of the following? Okay, first बता रहे हैं कि chemical changes in the composition of albumin. Now, albumin does not undergo any chemical changes in the MCNS. So, ये तो नहीं होगा. Second, increased permeability of the glomeruli. Now, increased permeability of the glomeruli in MCNS allows the large substances such as protein to pass through and be excreted in the urine. तो ये आप कह सकते कि ये एक हो सकता है. Next, obstruction of the capillaries of the glomeruli.
Obstruction of the capillaries of the glomeruli due to the formation of antibody or antigen complexes occurs in glomerulonephritis. Okay, so ये नहीं होगा. Next, loss of the kidney's ability to excrete waste and concentrate the urine. The loss of the kidney's ability to excrete waste and concentrate the urine occurs in renal failure. तो ये भी नहीं हो रहा है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 2, that is increased permeability of the glomeruli. Let's move over to the next question. The parents of a child hospitalized with minimal change nephrotic syndrome, that is MCNS, ask why the last blood test revealed elevated lipids. Which is the nurse's best response? Now, if your child had just eaten a fatty meal, the lipids may have been falsely elevated. Now, in MCNS, the lipids are truly elevated. The lipoprotein production is increased because of the increased stimulation of the liver caused by hypoalbuminemia. Okay, तो दैट इज़ वाई ये तो ठीक नहीं जा रहा है इसके साथ बेस्ट रिस्पॉन्स के हिसाब से. नेक्स्ट, इट्स नॉट अनयूजुअल टू सी एलिवेटेड लिपिड्स इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द डाइटरी हैबिट्स ऑफ टुडे. Now, the elevated lipids are unrelated to the child's dietary habits. Third, because your child is losing so much protein, the liver is stimulated and makes more lipids. तो तो MCNS में क्या होता है, ये जो lipids है they are truly elevated and lipoprotein production जो है that is increased because of the increased stimulation of the liver caused by hypoalbuminemia. तो ये आप कह सकते हैं कि ये till now is the nurse's best response. Next है, your child's blood is very concentrated because of the edema, so the lipids are falsely elevated. तो lipids are not falsely elevated over here, तो ये point भी गलत है. Next question पे आते हैं. Next question बता रहे कि a child with minimal change nephrotic syndrome, that is MCNS, has generalized edema. The skin appears stretched, the areas of breakdown are noted over the bony prominences, and the child has been receiving furosemide, that is Lasix, twice daily for several days. Which does the nurse expect to be included in the treatment plan to reduce the edema? देखते हैं कि नर्स को क्या लगता है कि कौन से चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं ट्रीटमेंट प्लान में टू रिड्यूस द एडिमा. फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, एन इंक्रीज इन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्यूरोसेमाइड, दैट इज लासिक्स. नाउ डोसेज ऑफ द diuretic may be adjusted, but other medications such as albumin are likely to be used. तो ये तो नहीं होगा. Next, addition of a second diuretic, that such as mannitol. Now, mannitol is not usually used in the treatment of MCNS. Next, तो ये तो नहीं जाएगा. Next, administration of intravenous albumin. Now, in cases of severe edema, albumin is used to help return the fluid to the bloodstream from the subcutaneous tissue. तो ये हो सकता है correct answer. फिर भी चेक कर लेते हैं लास्ट पॉइंट को, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फ्लूइड्स एंड सोडियम फ्रॉम द चाइल्ड्स डाइट. तो ऑल द सोडियम एंड फ्लूइड्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन द सीवियरली एडेमेटस चाइल्ड, दे आर नॉट एलिमिनेटेड प्रॉपरली. तो ये भी सही आंसर नहीं है. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस डिस्कशन करने हैं तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कीजिए, वहाँ पे सभी डिटेल्स मिल जाएगा. लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी जॉब, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी मिल जाएगा. So, in case of mock tests also, in case of doubt clearing sessions also, you can contact us. और अगर आपके मन में कोई भी queries है तो नीचे दिए गए comment box में आप post कर सकते हैं. Thank you for being with me till the end. चलिए मिलते हैं अगले videos में.